Hello friends, as we know there are different types of international funding organizations in which we discussed about first one, that is the World Trade Organization. Apart from that, different international funding organizations are there like IMF, International Monetary Fund, World Bank, and the most important World Custom Organization. So today in our session we talk about all these three. So बने रहिए session में अंत तक so that you are aware about all the implication of these three organizations. Fine. Hello friends, let's welcome to our today's session. आज हम बात करेंगे the three important international funding organization, and these are, first one is nothing but our World Bank, followed by International Monetary Fund, and lastly World Custom Organization. So in the contents we first of all see with the what are the different types of perspective of the World Bank along with the different types of implications. उसके बाद हम देखेंगे IMF, what are the different types of requisite and perspective for the IMF, and finally we move towards the WCO, that is World Custom Organization. जी हाँ, so चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड में World Bank. When we say World Bank, so definitely it is the important bank to cure the depression of the whole world from the 1940s onwards. और हम यहाँ पे कहेंगे during the end phase of the Second World War, during the 1940s, तब क्या हुआ था? There is a Great Depression. लोगों के पास पैसे नहीं थे, so during that condition World Bank actually paves the way for the economic transactions, for the economic way. That's why economy could be cured one. So now we deal with the World Bank. Officially it is known as IBRD, that is International Bank for Reconstruction and Development. Then established in July 1944. It will established under the Bretton Woods Agreement. ठीक है, इसके तहत इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी Bretton Woods Agreement. Okay. Currently there are 189 members of the World Bank. How many members are there? 189. And the 189th member, ठीक है, 189th member is the Nauru. ठीक है. Then we move towards head office. Head office is in Washington DC, United States of America. कई बार इसमें rather than place आपको country भी पूछी जाती है like this way. Part of World Bank group. Yes, there are nearly 5 to 6 organizations there who are act in a World Bank group. उस बारे में हम बात करेंगे. So currently the head person or the president of the World Bank is David Malpass, and currently MD and CFO, Chief Financial Officer, is Anusha Kant. Fine. Now we move towards the major objectives of the World Bank. So the first and the foremost important to reduce the poverty. Definitely यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी to reduce the poverty. It means World Bank has to provide the helping hand for the different types of underdeveloped countries, or there is another word, least developed countries, LDC. अगर हम उनको अच्छे से poverty उनका कम कर पाए, then and then only poverty of the whole world could be reduced in a effective manner. ठीक है. Then second one, provide loans and advances. अब यहाँ पे देखिए, provide loans to the different types of needy countries, some of the developing countries or even some countries that is the LDC, least developed country. तो उन्हें हमें लोन प्रोवाइड करना है. Again the loan is provided for the more tenure. इसका लोन का जो tenure होगा, जो duration होगा, ये duration बहुत ज़्यादा होगा. Nearly 10 to 30 years is the duration for the World Bank loan. And at certain phase we have to provide advances to the needy country. Then assistance for international trade. अब यहाँ पे हमें ये बात भी देखनी है, if there is any problem with concern to international trade, तो वो भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है by means of World Bank. क्योंकि यहाँ पे World Bank के बहुत से प्रोजेक्ट है, बहुत से देशों में बहुत से प्रोजेक्ट है, so उसके हिसाब से they have to run the international trade in a smooth manner. Fine. Now we talk about the most important some of the functions of World Bank. Fine. The first important thing is the development activities. Definitely World Bank का यही सबसे बड़ा मोटो है to have the development phase so that the economy could be in a boosting manner. Economy को बढ़ाने के लिए हमें development करना है. फिर development हमें कैसे करना है? With the help of we could say providing different types of advances, different types of project implementation, financing of the project to the countries. Then providing loans. अब देखिए IBRD's executive director, who is the one who actually sanctions the loan. What happen here? Government and private organizations may apply for the loan. पहले गवर्नमेंट मतलब एनी टाइप ऑफ कंट्री वो भी यहाँ पे लोन ले सकती है, और एनी टाइप ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर कंपनी वो भी लोन ले सकती है. ठीक है. देन द रीपेमेंट ड्यूरेशन, एज आई ऑलरेडी सेड,
रिपेमेंट ड्यूरेशन इज समवॉट मोर इन नेचर, नियरली 30 ईयर्स रिपेमेंट ड्यूरेशन यहाँ पे रहता है. एंड अगेन द इंटरेस्ट इज लेस. यहाँ पे ध्यान में रखिए, द इंटरेस्ट इज वेरी लेस और इवन फॉर सम ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इट देयर कुड बी नो इंटरेस्ट. इंटरेस्ट बहुत कम रहेगा, बट स्टिल द चार्जेस आर देयर. चार्जेस कौन सा रहेगा वहां पे? सर्विस चार्ज रहेगा या सर्विस टैक्स रहेगा, दैट इज अराउंड 0.5 to 1%. ठीक है, इतना वहां पे सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा, खाली इतना ही है. उसके अलावा फॉर डेफिनेटली देयर कुड बी वेरी लेस और नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, प्रोजेक्ट्स डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज कुछ प्रोजेक्ट्स देंगी तो दैट कुड बी अगेन फाइनेंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक. Technical assistance, so FAO is there, that is Food and Agriculture Organization. So along with them different types of program like WFP, World Food Program, तो ये भी उनको फाइनेंस करते हैं. Research and training to the different peoples, different countries, that could be again possible by means of the World Bank. अब हम बात करेंगे certain affiliated organizations. Keep in mind these are five important organizations with concern to the World Bank. We could again say this is the sister group of the World Bank. Which are these? IBRD, we already known. International Bank for Reconstruction and Development. It is the official name or the alternative of the World Bank. Second, IDA, International Development Association. IFC, International Finance Co-operation. Then MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency. Finally, International Center for Settlement of Investment Dispute, ICSID. It is typically for the dispute concern. So these are some of the important things for the World Bank. Now we move ahead with concern to IMF, International Monetary Fund. Friends, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, when we say monetary, it clearly means that it reveals about the different types of money, monetary policy that could be done for the world monetary policy of the IMF. अगर किसी कंट्री को कुछ लोन चाहिए, so IMF is the foremost important to provide the loan, to provide the different types of facilities. That's why it is International Monetary Fund, क्योंकि ये आपको फंड प्रोवाइड करता है. Established on 27 December 1945, again headquarter is at Washington DC, United States of America. So currently there are 190 members. ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिए, members are 190 member and the 119th member is nothing but the एंडोरा, और ये तो 2020 का ही है. सो एंडोरा इज द 190th member. Again what happened, currently the MD, managing director is Mr. Kristalina Georgieva for the IMF, International Monetary Fund. So these are the basics one. अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, when we apply for any type of fund, what could be the procedure? हमें फंड IMF से कैसे मिलेगा? सबसे पहले अप्लाई फॉर मेंबरशिप. आपको मेंबरशिप अप्लाई करनी पड़ेगी, मे बी बाय द मीन्स ऑफ कंट्री लेवल, लाइक दिस वे. एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जब आपको मेंबरशिप अलाउ हो जाएगी देन आपका प्रपोजल जाएगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ. देन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्क्रूटिनाइज योर एप्लीकेशंस विथ थरो एग्जामिनेशंस, पूरा एग्जामिन किया जाएगा. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ IMF इज द BOG, दैट इज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. ठीक है, ये सबसे बड़ी इनका ये है बॉडी है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, BOG. देन in the hand of BOG final clearance is there. और अगर आपको if your proposal suited to the all applicability then you got the final clearance by the board of governors. यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखिए, the main decision making body is the board of governors. इनके हाथों में मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मेन अथॉरिटी भी यही है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. फाइन. अब हम बात करेंगे सर्टन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द IMF, लाइक टू प्रमोट मॉनेटरी कोऑपरेशन अमंग द होल वर्ल्ड, क्योंकि हमें हर एक कंट्री के हिसाब से वी हैव टू कोऑपरेट टू ईच अदर. फैसिलिटेट बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ ट्रेड. डेफिनेटली ट्रेड कुड बी पॉसिबल एट अ इंटरनेशनल लेवल बट इट कुड बी इन अ बैलेंस्ड मैनर. मतलब इसमें क्या करना है हमें, वी हैव टू नलिफाई द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, उनका गैप हमें कम करना है, लाइक दिस वे. Exchange rate stability, it concerned to the foreign exchange, so definitely there could be a stable rate or at least somewhat stable in nature. Remove exchange restrictions, so here we could say rather than one-way transactions, multilateral systems could be provided so that exchange restrictions could be removed. Reduction of disputes, yes, different disputes could be there, different problems could be arises between many countries, so उसे solve करने के लिए we must have the reduction of disputes. Then we talk about certain important activities of the IMF. Stable exchange rate, yes, we already discussed about the stable exchange rate. Now second IMF responsibility.
Here the main responsibility of IMF is to provide the monetary fund to the needy countries, to the needy people. अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, they are providing the different types of loans, advances against fund which is advocated by the host country. मतलब जिस कंट्री का जितना फंड है उस हिसाब से उनको ज्यादा एडवांसेस, ज्यादा लोन्स मिलेंगे, लाइक दिस वे. फाइन. सो यहाँ पे ध्यान में रखिए, इंडिया टेकन लोन फ्रॉम द IMF इन द ईयर 1993 और वो पूरा उन्होंने रिपे भी कर दिया था. ठीक है. अब देखिए, सर्वेलेंस, डेफिनेटली थरो एग्जामिनेशंस थ्रू आउट द पीरियड, ये सबसे बड़ी बात है, सो दैट वी आर अवेयर अबाउट व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शंस. फाइनेंशियल असिस्टेंस, डेफिनेटली जैसा हमने कहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस कुड बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द पार्ट ऑफ द कंट्री. टेक्निकल असिस्टेंस विद कंसर्न टू द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं दैट कुड बी एक्चुअली गवर्न्ड और फाइनेंस्ड बाय द IMF टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज. देन गवर्नेंस, डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, जैसे हमने कहा है, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज द इंपॉर्टेंट वन. अपार्ट फ्रॉम दैट BOG, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द IMF. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज नथिंग बट द SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. ये सबसे बड़ी बात है. एज पर द वोटिंग पावर और एज पर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द IMF, आप IMF को जितना कॉन्ट्रीब्यूट करोगे उस हिसाब से आपके SDR आपको दिया जाता है, उस हिसाब से आपको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं. सो दैट कुड बी द थिंग. अब हम SDR थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि SDR इज वन ऑफ द मेजर कंसेप्ट. ओके, यहाँ पे देखिए, द IMF इश्यूज एन इंटरनेशनल रिजर्व असेट. सो SDR इज नथिंग बट वन ऑफ द रिजर्व असेट that known as SDR that can supplement the official reserves of the member country. मतलब हर एक मेंबर कंट्री को उनकी लागत के हिसाब से IMF provide the SDR rights. It is an international reserve assets created by IMF in the year 1969. मतलब 1969 के आगे IMF ने SDR स्टार्ट किया था. ठीक है. So what happened currently, ये सबसे बड़ी चीज ध्यान में रखिए. Currently there are 5 main currencies for the world transactions according to the SDR और according to the IMF. 5 करेंसी के हिसाब से आपको SDR दिया जाता है. कौन कौन सी 5 करेंसीज है? USD, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, येन जो जापान का है, और युआन जो चाइना का है. अगेन चाइना को भी ये 2016 से मिल गया है. देन व्हाट हैपन, IMF इज अ कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन. हर एक कंट्री को उनका फिक्स कोटा दिया जाता है और उस हिसाब से उनको वोटिंग पावर दी जाती है. If you want to approve something, अब ध्यान में रखिए, if you want to approve any proposal or anything, you need at least 85% of the votes. कितने वोट्स चाहिए आपको? कुल IMF के जितने वोट्स है उसमें से आपको अगर 85% मिलेंगे वोट या उससे ज्यादा मिलेंगे, then and then only the proposal could be cleared, proposal could be sanctioned. और उस हिसाब से the most important country is the USA. ठीक है. अब क्यों है वो आगे देखते हैं हम. ठीक है. सो इट इज द कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन. कोटाज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IMF फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, क्योंकि हर एक हिसाब से हर एक कंट्री को उस हिसाब से कोटा दिया जाता है. ठीक है. इंडियाज करंट कोटा इन IMF इज SDR 5821.5 million. दैट इज इंडिया रैंक्स 13th इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री. इंडिया का रैंक कितना है? 13वां रैंक है. फर्स्ट इज द USA. ओके, एंड इट्स शेयर होल्डिंग इज 2.44%. देखिए, अब इंडिया की शेयर होल्डिंग कितनी है IMF में? 2.44%. एंड अगेंस्ट दैट शेयर होल्डिंग इंडिया गॉट वोटिंग राइट ऑफ 2.6 और इवन 2.63%. अभी हम कहेंगे इंडिया को वोटिंग राइट कितना मिला है? 2.63% इज द वोटिंग राइट फॉर द इंडिया. ठीक है. और इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग इंडिया इज द 13th लार्जेस्ट शेयर होल्डर कंपनी. ठीक है, 13वीं कंपनी है, लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री. ठीक है. अब इसमें क्या है? एंड द वीटो पावर ऑफ US इज 16.52. सो डेफिनेटली अब जो हमने बताई थी बात, नियरली 16 to 70% होल्डिंग इज टुवर्ड्स द USA. इसलिए USA इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन टर्म्स ऑफ पासिंग द बिल बाय मीन्स ऑफ द वीटो पावर. फाइन. अब देखिए इसमें क्या होता है, इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ रिव्यू की जरूरत गिरी, सो रिव्यू करने के लिए हर एक बार एक कमेटी बैठाई जाती है. सो करंटली 15th जनरल रिव्यू ऑफ कोटा हुई थी 2020 में, और 16th रिव्यू कमिटी इज प्रपोज्ड इन द ईयर 2023. 2023 में 16वीं रिव्यू कमेटी होगी.
तो 15 में क्या हुआ था, देयर कुड बी नो एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ द कोटा, जितना पहले था उतना ही है. सो ऑन 7th February 2020 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स have the 15th general review of quota, so there is no change. Fine. So IMF make new allocation of SDR $650 billion to fight against COVID-19. कोविड-19 के हिसाब से फाइट करने के लिए IMF ने ये नया 2020 में ये निकाला था SDR के हिसाब से. फाइन. Now we talk about the third important organization, WCO, World Custom Organization. देखिए दोस्तों, ये आपको बहुत कम जगह पे इसका पूरा डिटेल्स मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बात भी नहीं की जाती इस बारे में. बट द थिंग इज दैट when we talk about the customs or when we talk about the trade, when trade is possible, when two sovereign country or two independent country make their way in terms of trade, जब दो देश एक दूसरे के प्रति ट्रेड करते हैं, सो दैट कुड बी द इंटरनेशनल ट्रेड. ड्यूरिंग दैट टाइम दे हैव टू क्रॉस द बॉर्डर ऑफ वन कंट्री एंड एंटर टू द अदर कंट्री, एंड दैट इज बाय मीन्स ऑफ द कस्टम. तब उनको क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगी. सो दैट्स व्हाई वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड. डेफिनेटली इट कुड बी इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, बट इट हैज द लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस. ठीक है, अब इसके इम्प्लीकेशंस कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, इट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1952. एक और चीज अच्छे से ध्यान में रखिए, इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑन 26 जनवरी 1952. डेफिनेटली ये डेट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रह जाएगी, बिकॉज इट इज नथिंग बट आवर रिपब्लिक डे. So the members, currently the member countries are 183 for World Custom Organization. 183. Fine. Apart from that, the headquarter of the WCO, ये अच्छे से ध्यान में रखिए, because the thing is that majority of the time the headquarter options में it is or the Geneva or the nothing but Washington. But here the headquarter is that the Brussels in the Belgium country. Now what happened? CCC is the previous name of the World Custom Organization. It means Custom Cooperative Council. Okay. Then it is renamed as the World Custom Organization. Okay. So India is the member of the World Custom Organization. India खुद भी एक member है WCO का. Fine. Now we talk about WC bodies. Okay. In terms of that, what are the most important thing? These are nothing but the secretariat. There are two important bodies. First है हमारा secretariat and second is the secretary council. In terms of secretariat, यहाँ पे ध्यान में रखिए, to actually do the day-to-day operations we require secretariat. Okay, day-to-day transactions जो भी आपके रहेंगे, so that's why leadership qualities could be there for the secretariat, World Custom Organization का. Then followed by that, one council is there, that is the Secretary Council, and currently Mr. Kunio Mikoriya has been Secretary Council or Secretary General of the WCO since 1st January 2009, and our Secretary Council provides executive management for the global custom community priorities. So it means यहाँ पे क्या हुआ था, definitely they have to take certain priorities with concern to the global expansion of the business. So that's why custom is important. That's why it is the role of the Secretary General. Then there are different types of affiliated things or different types of important points with concern to the WCO. Growth of trade. Definitely with हम जैसे कहते हैं World Custom Organization. So definitely by means of that, growth of international trade could be possible without much interference. That is important. Combat fraudulent activities. If any type of fraud could be taken, then definitely care could be taken by the WCO that such fraudulent activities could not be passed for the second time or for the second instances. ये वापस नहीं होना चाहिए. Like this way, acts as a bridge. Definitely WCO acts as a bridge between the host country and the international trade. Like this way, emergence of custom environment, because nowadays we require custom at every point to enter into any country. So that's why we have to maintain or create a healthy environment for the custom point of view. Protection of society. Definitely जब हम allow कर रहे हैं, at that time we have to again make a protection to the societal welfare, so that could be prevailed by. Secure and facilitate international trade at a global level. Now we talk about International Custom Day. In terms of International Custom Day, we could say it is every year International Custom Day is followed on the 26th January. ठीक है, हर साल को 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे फॉलो होता है. सो करंटली इन दिस ईयर इंटरनेशनल कस्टम डे कब हुआ था?
26 जनवरी 2021. So that is the logo of WCO. ये WCO का लोगो है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, द एवरी ईयर देयर इज स्पेसिफिक थीम फॉर द WCO और फॉर द इंटरनेशनल कस्टम डे की हर साल की एक अलग से थीम होती है एंड द थीम इज गिवन बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. अब द थीम थी 2021 की, ये कौन सी थीम है हमारी? कस्टम्स बोल्स्टरिंग रिकवरी, renewal and resilience for a sustainable supply chain. So that is the theme for the year 2021. Okay, and for 2020 the theme is that custom fostering sustainability for people, prosperity and planet. अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, with concern to COVID-19 the thing is there recovery, renewal and resilience. ये उसी हिसाब से ये तीनों वर्ड्स यूज किए हैं so that the strong recovery against COVID-19 could be possible. Fine. देन WCO मेक सर्टन विजन स्टेटमेंट. अब ये विजन स्टेटमेंट भी बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से दिए. द फर्स्ट वन इज द बॉर्डर्स डिवाइड, कस्टम कनेक्ट्स. ध्यान में रखिए, बॉर्डर्स कुड डिवाइड द डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम वन टू अदर बट कस्टम्स यूनाइट ऑल द कंट्रीज सो दैट इंटरनेशनल ट्रेड कुड बी पॉसिबल. सो फ्रॉम दिस वे वी कुड से आवर कस्टम और WCO acts as a bridging gap between the countries so that the trade could be possible in a better manner. And finally, dynamically leading modernization and connectivity in a rapid in the changing world. So we could say with the help of globalization WCO make their way. इस हिसाब से world could make in a better manner. Fine. And yes, definitely यहाँ पे एक चीज मैं कहूँगा, with concern to SDR special drawing rights, there are different implications for SDR. आज हमने वो पूरे नहीं लिए हैं, so definitely in the coming session we will talk about the SDR special drawing rights. Okay, if you have any issues, no, these are my details, you could catch me on these details. Fine. Okay friends, I think the session is definitely useful to you. Today we talked about different implications of the World Bank, IMF, who are the country members when they are established, and most importantly what are the functions for the same. And most importantly we covered again one small aspect of the WCO, World Custom Organization. And every year there is an International Custom Day which is celebrated on 26th of January. Fine. So definitely the session is useful to you, and if it's your first time on my channel then don't forget to click on like and subscribe button and hit on the bell icon. So stay tuned for the next session. Till then, thank you.